start with this. So did you read about the FPI, FDI and FII? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, so बताइए मुझे, what's the difference? Ma'am, FDI is foreign direct investment. So in this, if a person wants to make investments in in a foreign countries, like enterprise or a firm or a company, then that's FDI. FPI is when a foreign investor wants to invest in other countries' financial assets, like stocks or bonds. Okay. Anyone else? We could say that in FDI, that is foreign direct investment, the funding is basically for they invest in basically the company, as in the plant and machinery. And in FPI, that is foreign portfolio management, they invest in the stocks and bonds and mutual and bonds, etc. Yes, And yes. yeah, in FDI they get the ownership, and not in the FPI. So the thing is, the key difference you have to remember is FDI means in both the cases the foreign investors are coming. Okay, but in the case of FDI, the foreign investors are coming and they are putting in their money in the operations or the business of the company. When I say the operations, business or plant and machinery or the physical assets or setting up, it means that setting up a factory, right, where the actual operations take place. But in the case of FPI, their only mindset is to make profit. They are not at all interested how, for example, there's a pen manufacturing company. How the pen is, I'm extremely sorry. Am I audible? Yes, you are. Okay. So, okay, I was taking the example of pen manufacturing company. So they are not at all interested what the product is or what the process of manufacturing of pen is, but they would see अच्छा हमारा कितना profit margin होगा, and their main focus is in the board or the management. So they do participate in the management activities, in the board activities, where the major decisions are to be taken other than the operations. Okay, so they are just there for profit making, and FDI actually want to invest in the other countries' operations and the business. For example, Maruti Suzuki. मारुति सुजुकी, पहले होंडा एंड हुंडई का भी कोलैबोरेशन था, देन नेस्ले डिड, है ना, नेस्ले इंडिया सेटअप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया, राइट? एंड so these IBM. are the, sorry, Nothing, I was just quoting another example, nothing wrong. okay, yes, so they actually want to grow up the other countries' economy, whereas FPI प्योरली प्रॉफिट मेकिंग इन्वेस्टर्स, कि हमें कोई लेना देना नहीं है तुम क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट वी विल पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, वी शुड हैव अ से इन द मैनेजमेंट, सो दैट कोई भी बड़ा चेंजेस अगर लाना है देन वी शुड बी नोइंग बिकॉज वी आर द मेजर स्टेक होल्डर. एम आई मेकिंग सेंस? यस मैम. अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में अगर सेटअप खोल लेती है, लाइक सैमसंग मोबाइल बनाती है इंडिया में या एमआई, तो वो सब फॉरेन एफडीआई में आ जाएंगे. एफडीआई, हाँ. अगर प्लांट, जिस भी कंपनी ने अपना प्लांट लगाया है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, दैट विल कम अंडर द एफडीआई. सो इज इट लाइक कि मैन्युफैक्चरिंग ही होना चाहिए? आई मीन कोई भी अगर सर्विस सेक्टर का कोई भी है तो वो एफडीआई नहीं होगा? नहीं, एफडीआई के लिए या तो फिर ब्राउन प्रोजेक्ट्स होने चाहिए या तो फिर ग्रीन. आई मीन व्हेन आई से ब्राउन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स, फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड, ब्राउन प्रोजेक्ट मींस ऑलरेडी कुछ बेस बना हुआ है, यू जस्ट नीड द एक्सपेंशन ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस, एंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स मींस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. ओके ओके. सर्विस बेस्ड में तब हो, आई एम नॉट सेइंग सर्विस बेस्ड कंप्लीटली नहीं है,
because India में काफी service based industries हैं, but they are not producing anything. They are just outsourcing their manpower from India, right? Okay. तो जो ऐसी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, they are just getting their work done from the people staying in India. कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है चीजों का. But they are putting into the money, no? मतलब वो flow तो है currencies का Indian market में. हाँ, see, this foreign exchange वाला thing is completely different. But when you classify FDI and FPI, they are the investors. Now, Google setting up a office in India, not because they want to invest in India. है ना? Their motto is to get work done cheaply from India. So Okay. they are into the corporate cycle. They are into the different business cycle. And here, these are the investors we are talking about. Okay? Okay. Is your doubt clear? Yes, no. Okay. And FIIs क्या होते हैं? Foreign institutional investors. So consider it like a flow. FIIs are of two types, FDI and FPIs. And these are the institutional investors. ठीक है? FIIs as per definition नहीं है. These are of two types, FDI and FPI. Okay? Okay. And participatory P notes था. So आप बताइए, what did you understand by P notes? मैम P notes के बारे में नहीं पढ़ा हूँ. किसी ने पढ़ा होगा? It's Ma'am, P notes. offshore derivative instrument. Ma'am, P notes आपके वो थे like if a person wants to invest तो उसको जो सेबी है उसके साथ actually register नहीं होना पड़ेगा. He can directly buy the stocks. ऐसा हाँ, you are on the right path, but explain it more in detail. Ma'am, it's like if you are into private equity or a hedge fund industry, then you don't have to get into the hassle of actually getting registered with SEBI and then do your transactions. You can just directly buy or sell the company, whichever you do. So it like saves you time and the hassle of getting registered with the boards and everything. Yes, So it's yes, a shortcut sort of a thing. yes, absolutely right. Can you give me examples if there are currently existing such entities? Did you find out the current examples? No, ma'am. Okay, everybody find it now. अच्छा, इसके अलावा और मैंने क्या टास्क दिए थे बताइए, जब तक आप लोग सर्च करिए. Did I ask you to do anything else? मैम आपने ADR GDR रेशियो का बोला था. Dear, वो तो कब का? अच्छा, एक्सेल फाइल मिली? Yes, Your voice is breaking, Astha. नहीं. Astha, your voice is breaking. You can type it in the chat box. किसी ने फाइंड आउट की? मैम Excel? मुझे GDR मतलब मुझे एक्सेल शीट नहीं मिली बट GDR रेशियो मुझे मिल गया. So 1:10 है. Like 1 GDR is लेटेस्ट मिला है आपको? I think so. I don't know that वो उसमें So कुछ वैसे समझ. a date would be mentioned over that article or wherever you have taken, no? So which is the latest date? Ma'am, that I don't know. I have to see. Okay, first see that, है ना? If the data is old, then it's of no use to us. Yes, P notes बताइए मुझे तब तक. Okay. P note is issued to the client who are not registered directly in India. And they want to participate in the Indian stock market Correct. without, then how will they participate?
See, I if mean, they have to come to the legal route, I mean, this is also legal. I'm not saying this is illegal, but the normal way is to first of all get registered or notify the SEBI and then to participate, right? But if they don't want to come to the SEBI route, then they will come to the P notes. So I am just asking, P are notes. there any companies or are there any uh, entities which are there in Indian or which have invested in Indian stock market through P notes. So you have to find out those examples. So did you find out? Okay, Piyush is saying HSBC and Deutsche Bank. मैम सिटी ग्रुप एंड डॉल्चे बैंक मतलब ये लोग दे आर द लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स ऑफ पी नोट्स इतना मुझे Okay, मतलब okay. ठीक है, at least you should know, right? ऐसा नहीं होना चाहिए कि somebody asked you and you are completely blank. Now you know what P notes are and you know the 1-2 examples of it also. ठीक है? Okay. और कुछ तो नहीं दिया था ना मैंने? और कुछ दिया था? ठीक है, then we will start. The next topic is cash term spot trades. Okay, so you remember yesterday we discussed about T+2, है ना? So when the for example, in the case of intraday trading, your clearing and settlement takes place on the very same day. That is the cash trades. That is the T. If your clearing and settlement is completed in one day, I mean one day more than your trading day, that is the T+1. उसको हम बोलते हैं term trades. And if a settlement takes place on the 2 days after the trading day, that is the T+2, and we call it as a spot trades. So India में जो भी trades होते हैं delivery based, they are the spot trading or the spot trades. Okay, USA में क्या क्या होता है बताइए मुझे देख के. Tom trading, I guess. Tom, yes. So your task is to find out why India is on T+2, US is on T+1, or can India come to the T+1, or should US come to the T+2, or what should be the ideal scenario as per the economic situations. Okay, ठीक है. Forward transactions, futures and options I am not covering over here because these are the parts of equity derivatives module. Okay, so their instructor will cover in detail. Swaps also. Hedging, arbitrage, all these are the derivatives terminologies. आप अच्छे से पढ़ेंगे उसको. ठीक है. Next is dematerialization and rematerialization. Dematerialization, see, you remember, okay, if not you, then आपके parents ने or your grandparents जो भी market में trade करते होंगे, so they would have they must be carrying the physical shares in their times, right?
So एक सेबी का रूल नोटिफिकेशन आया था. Now there would be no more physical shares, so they have to convert it into the demat, or the demat is the short form of dematerialized shares. Okay, so that is conversion of physical shares into the electronic form. अभी आप नए लोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मिलेंगे वैसे भी. एंड रीमटेरियलाइजेशन इज ऑपोजिट, कन्वर्जन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल, जो शेयर्स के केस में तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, एनी डाउट? मैम देन हाँ जी. रीमेटेरियलाइजेशन का क्या था? सॉरी, कैन यू From प्लीज रिपीट वंस physical अगेन रीमेटेरियलाइजेशन? conversion of shares from the physical form to the electronic form. मैम Yeah. Yes. मैम एक बार सब ब्रोकर और ऑथराइज्ड पर्सन में डिफरेंस बता दीजिए. Yes. So see, sub broker is like okay, you have a main. Earlier it used to be when there was a ring trading, है ना. अभी तो everything is electronic. जब ring trading होती थी, there used to be major brokers and there used to be sub brokers under them. So you just call them and you tell them कि मुझे आज ये trade लेना है. Okay, so they were the sub brokers who actually used to trade, and main brokers were, you know, like their heads. So it's just like you know, departmental head and departmental employees ka relationship, nothing more than that. Okay, abhi they exist, they don't exist because everything is electronic, so now you don't need brokers, sub brokers और ये सब चीजें. ओके मैम. An authorized person, the authorized person is not okay. So you, are you a commerce graduate or a science graduate? कॉमर्स. Then you must be knowing the definition of a person, right? Not just a human entity, but any registered entity or body corporate, right? और बहुत सारे उसमें parameters और हैं. So any entity, any registered entity, authorized person कौन होता है? Which has that legal right to do the transaction of this trading वाला part. Now it depends कि वो financial intermediary कौन से part में आपको help कर रही है. Whether they are into the clearing, whether they are into the settlement, whether they are just confirming the trades, right? So just intermediary assisting your trade settlement. Making sense? ओके मैम. यस मैम, क्लियर. Yeah. Okay. Now we will move towards the terminology in equity and debt markets. Okay, so when I say the debt markets majorly consist of the bond market. You remember that Excel file we had understood whole bond payout? You remember it or not? Yes, ma'am. Yeah? Yes, ma'am. Okay. So that first of all, the terms related to the equity market. The first is the face value. Okay, so whenever a share gets listed on the stock exchange, तो उसकी एक शेयर सॉरी उसकी एक फेस वैल्यू होती है, राइट. फॉर एग्जांपल अभी जोमेटो का कितने पे लिस्ट हुआ था? सम 120 अराउंड. कितने पे लिस्ट हुआ था फर्स्ट डे पे? ₹1. कितना? शायद ₹1. Your voice is breaking. Your voice is breaking. I think it was 126. हम वो ओपन 116 पे हुआ था जो ओपनिंग था. 115. ठीक है. सो जब लिस्ट हुआ वो 115 पे हुआ एंड उसकी बिड्स किस रेंज में थी? बिड्स किस रेंज में थी? 72 to 76. 72 to 76. ओके. सो सी, अब जब अगर आप इसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा व्हाट इज द फेस वैल्यू. नाउ लेट जनरली शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज होती है. सो इट्स लाइक फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इक्वल्स टू द प्राइस एट विच
stock is being listed. Okay, for example, it got listed at 115. Okay, so the face value कितनी थी? 10. I'm assuming it is 10. 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, any number. Okay, so 10 rupees, consider it as the face value plus the premium. Premium क्यों मिलता है? Because of that company or because of the financials of that company or many other factors, right? And adding that to the face value will give you the actual price at which it is being listed on the stock market. ठीक है? So the premium is company specific, but face value is something which is decided along with or in collaboration with the SEBI. So that is the face value at which stock is being listed. ऐसा नहीं होता कि face value पे होता है, it always gets listed on some premium. ठीक है? Also you need to remember one more thing, that जब भी dividend मिलता है, so dividend is always declared on the current face value of the share. Those who must be trading, उनको पता होगा जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो कंपनी की तरफ से आपको एक ईमेल आता है, उसमें वो लोग बताते हैं कि इतना % हमने डिक्लेयर किया है एंड द करंट फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज इतना रुपीस. यस और नो? यस. Yes, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट इज द बुक वैल्यू. बुक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी, ऑल्सो वैल्यू ऑफ एसेट्स भी होता है, एट विच इट वॉज मेंशन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. ओके, इसको ऐसे समझेंगे. Let's say you buy a refrigerator. Okay, you bought a refrigerator at say 50K and you use it for 10 years. ठीक है? And when after completing 10 years you go to the market and sell that refrigerator, it is not possible for you to sell it at the same 50K. But अब वो 5,000 में बिकेगा, 8,000 में बिकेगा. Why? Because of the depreciation. Over a period of time उस product पे depreciation लगा है, right? Because you use it, wear and tear होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है. So the book value, यानी कि the value at which the refrigerator was mentioned in the books of accounts when it was bought, that is still 50K, but its current market value after 10 years gets reduced to 8K. Okay, that's the difference between a market value and the book value. Am I making sense? So ma'am, face Yes. value. मैम बुक वैल्यू वही होती है ना, मतलब करंट वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी. करंट वैल्यू तो मार्केट वैल्यू हो जाएगी. जिस प्राइस पे आपकी बुक्स में अकाउंट में लिखा गया है वो वैल्यू इज द बुक वैल्यू. मतलब 50K हमारी बुक वैल्यू होगी जी. 50K, जैसे जो रेफ्रिजरेटर था वो 50K का था, तो हमारा बुक वैल्यू 50K होगा. हाँ, अगर आपने आज बाय किया है तो यस. यस. मैम फेस वैल्यू और बुक वैल्यू सेम ही होगी या कि डिफरेंस होंगे? नो, सी फेस वैल्यू इज ऑलवेज ऑफ शेयर एंड बुक वैल्यू दो कंपोनेंट होते हैं, इक्विटी भी होता है एंड डेट भी होता है. आई डोंट नो यहाँ पे कैसे उन्होंने दिया है. हाँ, सी शेयर कैपिटल एंड डेट है ना. अब आपने देखा होगा, सपोज आज स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुआ है, अभी अमेजोन सॉरी जोमेटो का देखते हैं कितने पे हुआ था, 115 पे है ना. बट अगर आप उसको 10 साल के बाद देखोगे तो लेट्स से उसका स्टॉक हो गया 15,000 का, तो 10 साल के बाद उस स्टॉक की करंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 15,000. बट बुक्स में क्योंकि आज वो लिस्ट हुआ है तो कितनी रहेगी? 115. 115. ठीक है. Yes. फेस वैल्यू तो अलग कॉन्सेप्ट है. फेस वैल्यू पर शेयर होता है, फेस वैल्यू एक शेयर का होता है प्लस प्रीमियम पे वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है. ठीक है. See, market value, we just now discussed the current price of a stock. Replacement value, this is mainly in the case of fixed assets. When you buy a new machinery, so at the time of buying a new machinery, the finance department do the the replacement cost analysis. अब replacement cost analysis क्या होता है कि whether we should go for a new company or we should replace the same machinery with the other one rather than buying the
न्यू मशीनरी। सो देखते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस किसमें आ रही है। सो इन दैट केस वी लुक फॉर द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। Now we have the intrinsic value. Anybody having any idea what's the intrinsic value? मैम जो उसकी बेसिकली करंट प्राइस है उस कॉस्ट से कम, कॉस्ट से ज्यादा है उसकी, Current price? कॉस्ट से ज्यादा है। कौन सी cost? मेकिंग मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। No. मार्केट वैल्यू से इंक्रीज होना चाहिए इंटरेंशियल वैल्यू। मार्केट वैल्यू से इंक्रीज होना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू पर। मैं तो पूछ रही हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। मैम इसका मतलब है मार्केट में जितनी की ट्रेड हो रही है मतलब रियल में होनी कितनी चाहिए थी। Correct. The true value, right? If I have to say in the easy terms, what's the true value or what's the fair value? बट मैम इंट्रिंसिक वैल्यू तो आपका फोरकास्टेड होती है ना। नहीं। नहीं मीन्स मैं जितना कैश फ्लो, अगर मैं फ्यूचर कैश फ्लो को अगर फॉर्मूला में डाल के अगर निकालता हूँ तो वो एक वैल्यू आती है कि मुझे इस वैल्यू में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट वो Yes. मार्केट से इंक्रीज होना चाहिए, तो वो Yes. तो मैं फोरकास्ट करके फ्यूचर से लाता हूँ। तो आप इन्वेस्ट भी फ्यूचर प्रोजेक्शंस पे की बेसिस पे ही कर रहे हो ना। आप अब हिस्ट्री में जाके तो अब इन्वेस्ट करोगे नहीं। हाँ तो बट ये भी तो इंटरेस्टेड वैल्यू एक तरह का फोरकास्टेड वैल्यू हुआ ना, जो कि मैं टुडे आज मैं इस वैल्यू पे इन्वेस्ट करूँगा। See, what your aim is, you need to find out the true value through future cash flows. So you are projecting the cash flows, but you are not projecting the intrinsic value. That is the value which we get as of now because you bring all the future values into the present terms. So वो आज की terms में ही आपको fair value बता रहा है. You just forecast the cash flows, but not the fair value. ठीक है, आप डीसीएफ की बात कर रहे हो ना। लेट्स कम टू दैट टॉपिक। हाँ, तो डीसीएफ में आप क्या करते हो? आप कैश फ्लोज का प्रोजेक्शन करते हो, बाद में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा के आप सारे कैश फ्लोज को आज की डेट में लेके आते हो। तो जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है वो तो एज ऑन डेट आ रही है ना, फ्यूचर वैल्यू तो आ नहीं रही है ना। एंड यू आर कंपेयरिंग इट विद द करंट मार्केट प्राइस, दोनों आज की डेट में ही है। ठीक है, market value is the current market price, intrinsic value is the current fair value. मैम एक बार रिप्लेसमेंट वैल्यू दोबारा बता दीजिए। Yeah, so a replacement value means जब आपको कोई एक न्यू मशीनरी बाय करनी होती है, राइट? तो उस केस में आपकी कंपनी के पास दो चॉइसेस हैं। या तो फिर वो एक न्यू मशीनरी लेके अगर पुरानी वाली बिगड़ गई है तो, और एल्स दे कैन replace the existing with the other second hand machine rather than buying with the newer version. So किसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कंपनी को करना पड़ता है। कॉस्ट versus efficiency, right? So that is the replacement value कि क्या replacement value होनी चाहिए या क्या replacement value आ रही है in order to have the same efficiency or what all parameters they want to look for. So उस मशीनरी की replacement value निकालते हैं, that is a replacement value. ठीक है? ओके मैम। Market cap is nothing but very simple. Total number of shares outstanding multiply by current market price will give you the market capitalization of that company, right? So you need to tell me where will you find out the total number of shares outstanding in your annual report. इन बैलेंस शीट। हाँ नहीं, देखो देख के बताइए। Ma'am, can you repeat the question? Where will you find out the total number of shares outstanding in the annual report? You have your respective annual reports, right? Look into it and tell me for your respective company. You can send it in the chat box with लोकेशन कि आपने कहाँ अपने एनुअल रिपोर्ट में आपको किस सेगमेंट और किस हेडर के अंडर में मिला है। टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग।
इक्विटी के शेयर कैपिटल को कहते हैं क्या? जी, इक्विटी शेयर कैपिटल को ही टोटल आउटस्टैंडिंग कैपिटल आई कहते कांट हियर यू। हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल को ही टोटल आउटस्टैंडिंग कैपिटल कहते हैं। कौन से शेयर? इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं नहीं, क्लियरली मेंशन होगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। I mean unclaimed share, अनक्लीन? unclaimed share. नो नो नो, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अर्निंग पर शेयर में अर्निंग पर शेयर? नो नो, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। कितने शेयर्स हैं कंपनी के द्वारा रिलीज किए गए मार्केट में, दोज आर द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अर्निंग पर शेयर में ही लिखा है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। अर्निंग पर शेयर के कैलकुलेशन के रेशियो में आपको मिला है? यस मैम। इट मींस आपको इनकम स्टेटमेंट में मिला होगा। कहाँ पे आपने देखा आपकी एनुअल रिपोर्ट में? मुझे एनुअल रिपोर्ट में बताइए। आप लोग तो एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे थे ना, आपको तो पता होना चाहिए था। इट मींस यू गाइस आर नॉट रीडिंग एनुअल रिपोर्ट। हम टोटल आउटस्टैंडिंग कैपिटल तो नहीं दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, हम उसी को तो ही कहते हैं ना। ओके, तो मुझे हेडर बताइए आपको कहाँ मिला है, किस लाइन आइटम में? बैलेंस शीट में इक्विटी सेक्शन में, इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन का जो इक्विटी सेक्शन है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है। जो शेयर कैपिटल है उसमें अलग से शेयर्स थोड़ी दिए हुए होंगे। उसके नीचे अदर इक्विटी एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिखा हुआ है। नहीं नहीं, वो इट्स अ कंप्लीट इक्विटी। नो, इक्विटी इज व्हाट योर मार्केट कैप। ओके, आई एम आस्किंग कि कितने शेयर्स हैं कंपनी के, आई मीन I have shared a screenshot in WhatsApp group. Is it given under GDR? is it, are you asking me? I have asked question to you. I mean GDR के अंडर में शायद, मतलब जीडीआर? मैं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट पे। Astha, you are not audible. No, no, no. मैम कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स में होगा क्या? वेरी नियर। कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स में उसके जितने भी हैं उसके टोटल करेंगे तो मतलब वरुण बेवरेजेस के दिए हैं 28,86,88,720। Yes, absolutely right. I really appreciate. थैंक यू मैम। उसमें आपको सब मिलेंगे, प्रमोटर कितने हैं, नॉर्मल पब्लिक के पास कितने हैं, एफआईआई के पास कितने हैं, है ना? सॉरी, कहाँ मिलेंगे? हेलो, कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स में। ओके, कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर, थैंक यू। बट जरूरी नहीं है कि आपकी कंपनी ने सेम हेडिंग से पब्लिश किया हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न के नाम से भी ये लोग कभी कभी पब्लिश करते हैं। सो यू जस्ट सी, है ना, कि आपकी कंपनी ने कैसे पब्लिश किया है। अभी आपको आपके एनुअल रिपोर्ट से शेयर्स ही नहीं मिलेंगे तो आप कैसे मार्केट कैप फाइंड करेंगे? प्लीज प्लीज स्टडी योर एनुअल रिपोर्ट, है ना।
Don't take it lightly. ठीक है. Now your other task is to study about the enterprise value. ठीक है. Then we will discuss enterprise value and the DCF model you have to study. It is a discounted cash flow. ठीक है. Okay. Now I will show you something. Okay. So this is one of the financial statement for the Nestle India. ठीक है. Now you have here three different terms: historical, trailing, and forward. Just forget about the earnings. We will just understand the meaning of these three. Historical data means which has been already published in the annual reports, and now the accounts have been closed for that financial year. Okay, that is the historical data which we get. Just a second, guys. Just a hello. Yes. Okay. So all the historical data which has been already published by the company. Okay. उसको हम बोलते हैं the historical. I just understand the historical meaning. Okay. Forward means whatever the projections we do. Okay. So for example, जब आप DCF अभी पढ़ेंगे, so you forecast the cash flows for the future years, right? Also, you anything which you are forecasting that would come under the forward or the forecasted data. And the trailing. Now you need to understand this trailing thing meaning. Okay. Now, can you see here trailing 12 months TTM? The last column, right? It means trailing 12 months. ठीक है. Trailing 12 months means जहां पे भी आप अभी हैं वहां से last 12 months. Okay. So you are in month of August 2021. So you will take the financial data from August 2020 to August. See, August अभी start हुआ है. Let's take the July. Okay. So from 1st of July 2020 to 31st of July 2021. It means the current 12 months from as on date. ठीक है? Is this clear part? Yes, ma'am. Now how do we calculate? Because see, आपके पास दो तरीके के स्टेटमेंट्स कंपनी देती है. जब आपने अपनी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड की होगी, आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स भी मिले होंगे और आपको एनुअल रिजल्ट्स भी मिले होंगे, right? So there are two types of different results which the company publishes. One is the annual report, that is from 1st of April to 31st of March. Okay, and second one is the quarterly reports. Now see, you have the annual report till 31st of March 2021. Okay. उसके बाद कितने महीने आपको चाहिए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने. इट मीन्स आपके पास एक क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ चुके हैं अप्रैल, मई, जून का. यस, यस और नो? Right? Yes. So in order to come up to the latest up to June data, what will you do? जो फर्स्ट क्वार्टर है लास्ट ईयर का 2020 का, those figures you will subtract from the annual report and you will add on to the newly published quarterly results of 2021.
सो आपके पास अभी फाइनेंशियल डेटा कहाँ से कहाँ तक का है? 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक का। फर्स्ट क्वार्टर आप पिछले साल से रिजल्ट सब्ट्रैक्ट करोगे और इस साल के न्यू क्वार्टरली रिजल्ट आप ऐड ऑन करोगे, तो एक साल बन गया। 3 मंथ सब्ट्रैक्ट किए और 3 मंथ आपने ऐड ऑन कर लिए, तो एम आई मेकिंग सेंस? मेगा फिर से बताइएगा। ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आपका ध्यान इधर उधर होगा ना, यू वोंट बी एबल टू कैच दिस पॉइंट। फाइनेंशियल एनुअल रिजल्ट्स हमारे पास 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के होते हैं। So let's understand कि अभी आपके पास 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक के हैं। ओके, बट मुझे एज ऑन डेट, मतलब मुझे आज की डेट तक, ट्रेलिंग 12 मंथ्स मैंने क्या बोला, आज तक होना चाहिए। बट मेरे पास कंपनी की तरफ से सिर्फ 2 तरीके के रिपोर्ट्स आते हैं, क्वार्टरली एंड एनुअल। सो एक मेरे पास फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आ चुके हैं कंपनी के, दैट इज फ्रॉम अप्रैल मई जून 2021 का। तो मैं क्या करूंगी, जो एनुअल रिपोर्ट है, जो एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, उसमें से जो लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करूंगी, एंड दिस ईयर्स फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आई विल ऐड ऑन। तो 12 महीने हो जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक होंगे? पहला क्वार्टर पिछले साल से हटा दो, तो अप्रैल मई जून 2020 हटा दो। इट मीन्स 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक के ये 12 महीने के रिजल्ट्स आपके पास हैं? Yes or Yes, no? ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now, how will you come up to the current as on date? You cannot, because आपके पास सिर्फ जुलाई मंथ का डेटा नहीं है। कंपनी आपको मंथली रिजल्ट्स नहीं देती है। सो योर ट्रेलिंग 12 मंथ जो आपको लास्ट कॉलम में दिख रहा है, वो कहाँ तक का है? जून तक का रिजल्ट है आपके पास, जून 2021 तक का। इज दिस पार्ट क्लियर? कैसे कैलकुलेशंस होती हैं? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या परफेक्ट। अब इसमें कुछ भी हो जाए, अब इसमें इनकम की बात कर लो कि नेट प्रॉफिट की बात कर लो, या कोई भी लाइन आइटम उठा लो, उसका नाउ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल, ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड। ठीक है, ठीक है। Now we have the EPS, that is the earning per share. But before jumping into these ratios, I want you to go through the balance sheet, income statement and cash flow statement for your respective companies. अब go through का मतलब ये नहीं कि पन्ने पलट के देख लिया। Read each and every line item, जो लाइन आइटम्स हैं, जस्ट अंडरस्टैंड देम कि हाँ, व्हेन आई आस्क, क्योंकि ये लाइन आइटम आपने रीड किया कि नहीं किया, तो आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, because I will be asking you to calculate these ratios parallelly. Okay, so I'm giving you 2 to 3 minutes. Just go through all the 3 financial statements अच्छे से. If you have any doubt, you can ask me. And the flow of the financial statements, how it should be, we will understand it. बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ ले कि कहाँ पे क्या चीज है और कौन सी चीज होती है, कौन सी चीज नहीं होती है। ओके,
How many people in total enroll for this course? Do you have any idea? Because I see different attendance every time. On first day there were more people, no? I don't even hear anything from few people. Somesh? Somesh? Sonal? Yeah, ma'am. Okay, why don't you participate? Ma'am, today I joined little late. Yesterday I was not there. I'm participating. Last time I was okay. ठीक है. Hmm. Sanket? Yes, ma'am. Okay. Hope you are not sleeping. No. Okay. Then who's this? Jay Mishra. Yes, ma'am. Are you there? Yes, ma'am. अब मैंने तो कभी आपको सुना नहीं. No, ma'am. I have attended. This is my second class that I have attended now. Okay. कल की सेशन में थे आप? No, ma'am. कल के नहीं. Last week के Saturday वाले सेशन में था और फिर आज ज्वाइन किया. Okay, okay, okay. Sarang? Sarang? Sameer? Mayank? Yes, ma'am. मैंने तो आपको कभी पहचाना ही नहीं. मैं तो आज ही आपको पहली बार सुन रही हूँ. I have attended all the classes. All the sessions? Yes, ma'am. Okay. Aryan? Yes, ma'am. Ketan Sharma? Yes, ma'am. Okay. मैम हाँ जी. मैम फाइनेंस कॉस्ट अपना इंटरेस्ट हो गया हाँ, interest. Yes. एंड ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या हो गया? Employed benefit expenses. So for example, जैसे सैलरीज होती है ना, वैसे ही ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट में का पार्ट होगा, राइट? नहीं एक्चुअली एक्सपेंस में ही टोटल दे दिया है, टोटल एक्सपेंस करके. So okay, I will explain you the complete flow of financial statements. ठीक है, एक बार जस्ट आप लोग go through कर लीजिए, then we will discuss. And ma'am, we should consider the other comprehensive income. Other comprehensive income is see, you have two different types of incomes, right? When you say your income from the normal business operations and from the other sources. So other sources वाली होती है that you come under the other income, right? And जो आपकी normal business operation से आती है उसको आप revenue या sales जो भी बोलते हो, company जैसे भी mention करिए, that is the revenue. And you have the third component, that is the other comprehensive income. अब वो एक third dimension है. So just hold on for your query, okay? I will make you explain. But अभी जो आप पढ़ रहे हो उसमें आप ये दोनों देखिए. I will make you explain. Don't worry. Jot it down if I forget. अभी बता दूंगी ना. Everybody would be, very scared. So I don't want to scare other people. Okay, ma'am. अगर आपके पास वो आ गया है तो अभी तक के लिए आप ये समझ सकते हो, डिटेल में अपन समझेंगे कि वो इट इज द अनरियलाइज्ड गेन और लॉस. ओके, यानी कि जो अभी तक इनकम स्टेटमेंट में नहीं आया है, दैट इज द अनरियलाइज्ड वन. अब वो क्यों हो सकता है? अगर आपको पता हो कंटिंजेंट लायबिलिटीज के बारे में या कुछ. आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट.
तो तभी मैं बोल रही हूँ ना, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझाऊंगी मैं, ठीक है? ओके मैम, नो प्रॉब्लम। How about preference dividend? How can I understand if it is a cumulative or non-cumulative when looking at a statement? नोट्स टू अकाउंट्स में हर चीज क्लियरली मेंशन होती है, so you need not to put your brains, you just need to understand and read the whole annual report. They clearly mention whether cumulative है or not. See for okay, so जैसे अभी आपने स्टेटमेंट देखे होंगे जहां तक भी, so you see जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तीनों, दे आर वेरी क्रिस्प, only one line items are there, और उसके राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में कुछ नंबरिंग होगी 20, 21, 15, 14, so Yes, those yes. are the numbers of notes to accounts. So as you finish the financial statements, उसके बाद स्टार्टिंग होगी आपकी notes to accounts की, ठीक है? नाउ अंडर द नोट्स टू अकाउंट्स आपको हर चीज की डिटेल्स मिलेंगी कि जो पहला लाइन आइटम है उसका जो फिगर है, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस इन लोगों ने इंक्लूड किए हैं और कौन कौन नहीं किए, मैं जो नहीं मेंशन है वो नहीं किए, कौन कौन से एक्सपेंसेस इन लोगों ने इंक्लूड किए हैं, इनडायरेक्ट में कौन कौन से इंक्लूड किए हैं, व्हाट अगर if there is a change in the recording or change in the accounting standard, तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आया है, या कोई न्यू रेगुलेशन आया है तो उसका क्या इम्पैक्ट है. So each and every minute details of that figure you will get in the notes to accounts, right? So ठीक है, अभी तो आपने जितना भी स्टडी किया है, बट when you will study for, you have a week's time, right? Just understand the financial statement and link it with the notes to accounts. I don't expect कि आपको हर एक चीज अभी समझ में आएगी, but at least आप एक एक करके पढ़िए तो सही, because this is I guess unless and until you go into the financial analysis domain, this is the one time activity which everybody you guys are doing right now. ओके, सो एक बार एनुअल रिपोर्ट को अच्छे से पढ़िए सो दैट यू विल नो कि हाँ कौन सी चीज कहाँ पे मिलेगी, और जैसे कि कुछ लाइन आइटम्स में डिटेल्स होती ही नहीं है, कुछ कुछ न्यू न्यू टर्मिनोलॉजी से गूगल इट, नहीं समझ में आता है तो मेरे से पूछिए, राइट? बट अंडरस्टैंड इट. उससे पहले ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू दिस, जस्ट सेकंड. हेलो, hi. I just call you back in some time. Yeah, yeah. Okay, bye. Hope you guys are able to see my Excel sheet. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ठीक है. So first of all understand the income statement. ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आपने रेवेन्यू पढ़ा होगा, राइट? सबसे पहले क्या आता है? रेवेन्यू. रेवेन्यू means what all income you are getting by selling your main products. और इसको क्या बोलते हैं? टर्नओवर. So these are the synonyms, okay? कुछ कुछ कंपनीज रेवेन्यू बोलेंगे, कुछ कंपनी सेल्स बोलेंगी, कुछ टर्नओवर बोलेंगी. So what all money you are getting inside your company by selling the core products of your business operations, okay? Then you have the direct cost. Direct cost क्या होता है guys? Costs which are actually or directly incurred to manufacturing the products which you have sold. For example, for the manufacturing of a pen, right? A pen के manufacturing में आपको क्या क्या चाहिए होगा? The outer plastic cover, the ink, the nib, right? So these are the costs which are directly involved. If you subtract them, you come to the क्या बोलते हैं? gross profit. ठीक है? Then you subtract the indirect cost.
इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? अब ऐसा तो है नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आइसोलेशन में चलेगा, उसमें सप्लाई चेन होगा, ह्यूमन रिसोर्स होगा, मार्केटिंग टीम होगी, फाइनेंस टीम होगी, उन सबकी सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट विच आर इन्वॉल्व फॉर द गेटिंग द रेवेन्यू फ्रॉम दैट प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। सॉरी, डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन भी, यस यस। नहीं, डेप्रिसिएशन अभी थोड़ी हटाएंगे। नो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नो। इसके बाद आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप बोलोगे एबिडा, दैट इज द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ठीक है, अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन. Now you will get EBIT, that is the earning before income and taxes. You pay the interest और आपकी जिसमें किसी ने पूछा था फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी ने लोन लिया हुआ है, राइट? अब उस लोन को रीपे करने के लिए आप इंटरेस्ट भी तो पे करोगे. इट्स नॉट लाइक यू विल जस्ट पे ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, बट यू विल पे ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट also which is associated on the debt, right? So that is the interest. Now this is net of interest. If you have invested in some securities, so you will also gain from those securities as an interest. आप एफडी रखते हो तो कॉर्पोरेट भी तो कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट करते होंगे और उस पे वो लोग कमाते होंगे इंटरेस्ट, राइट? तो नेट ऑफ इंटरेस्ट वी टेक इनटू द फाइनेंस को, जो आपने दिया और जो आपने गेन किया. नाउ यू विल गेट अर्निंग बिफोर टैक्सेस. नाउ यू विल पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, right? That will be subtracted and you will get PAT or the net income, that is the net profit. Profit after tax or the net income is the final profit or the bottom line जिसको बोलते हैं of an income statement, and this revenue is the topmost line or the top line item in the income statement. Is this flow of income statement clear to everybody? Yes, ma'am. मैम ये इनडायरेक्ट इनकम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट होगा? इनडायरेक्ट इनकम, यस मैम. हाँ, ऊपर ही आ जाएंगी. यस, ओके. ठीक है. अब एक बार आप देखिए जो आपने अभी अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा होगा, इट शुड बी इन द सिमिलर फ्लो. आर यू एबल टू कोरिलेट इट नाउ? सी वन. Yes, ma'am. या ठीक है. Next we have is the okay, so guys you need to understand. मैं आपका जो मॉड्यूल है उसके फ्लो के अकॉर्डिंग हमेशा नहीं जाती हूँ. So I might cover few of the topics which would be covered later on. But what I feel is before going to the advanced topics, your basics should be clear. So मैं पहले बाद के टॉपिक्स कुछ पहले कवर कर लेती हूँ, पहले के बाद में. So this, I mean, the regular flow won't be there. So जब हम उस टॉपिक पे जाएंगे, then I will ask you whether you remember it or not. तो आप मुझे बता देना if you still have doubts. Okay, I will repeat it. Next we have is the balance sheet. Okay, so guys, balance sheet में आपके पास दो basically broad headers होते हैं, assets and the liabilities. Okay, under the assets you see broadly it would be the current assets and the non-current assets. Can you guys see it? Yes, ma'am. Yeah. And under the liabilities it would be three: the long-term liability or the non-current liability, two, the current liability, three, that is the share equity or the equity capital or the net worth. यानी कि it depends कि कंपनी ने कैसा आपको declare किया है. Under the equity header broadly it would be. Are you able to correlate till now? Yes, ma'am. Yeah. Now
What do you understand by current assets and current liability? Current assets means those assets which will fetch you money within 1 year of time. That is the during the short duration. आपके पास पैसा आने वाला है उन assets से within 1 year. Okay. Now current liabilities are the liabilities which the company has to pay within 1 year of time. करंट एसेट्स 1 ईयर में पैसा आने वाला है, करंट लायबिलिटी 1 ईयर में आपको पैसा पे बैक करना है. ओके. लॉन्ग टर्म और द नॉन करंट एसेट्स मीन्स विच विल फेच यू मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज more than 1 year. And long term loans means which you have to repay over a period of time. For example, कोई new plant manufacturing के लिए आपने इंडस्ट्री डाली है, उसके लिए आपने बैंक से लोन उठाया 10 करोड़ रुपए का. अब कंपनी 1 साल में तो 10 करोड़ का डेट रिपेमेंट नहीं दिखाएगी ना. तो फॉर एग्जाम्पल 10 साल तक 1-1 करोड़ रिपे कर रही है प्लस इंटरेस्ट. ओके. सो this is a long term liability that the company has to repay over 10 year of time. Similarly, if a company has bought a new machinery for a new plant or a factory, ऐसा तो नहीं है कि जितना पैसा लगाया है उतनी ही सेल्स 1 साल में हो जाएगी, क्योंकि सेल्स होगी तभी तो पैसा आएगा ना कंपनी में. ऐसा नहीं होता है, राइट. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके कॉस्ट रिकवर होगी थ्रू सेल्स इनडायरेक्टली. सो दैट इज अ नॉन करंट एसेट्स. एम आई मेकिंग सेंस? होप आप साइमल्टेनियसली अपने अपने बैलेंस शीट देख रहे हैं. यस मैम. है ना? ठीक है. सो एंड द थर्ड पार्ट इसमें बचा इक्विटी वाला. इक्विटी में यू विल गेट द मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे अभी अपन ने देखा, राइट. सो दैट इज द शेयर होल्डर्स इक्विटी. द लाइन आइटम which would be mentioned over there. So क्या बोलेंगे कंपनी वाले? शेयर होल्डर्स इक्विटी. अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं तो उन्होंने वो भी मेंशन किया होगा, डीवीआर इशू किए हैं तो वो भी अलग से मेंशन किया होगा, राइट. सो दिस इक्विटी और क्या होता है, और कुछ है क्या गाइस वहां पे? हाँ, प्लस वन मोर लाइन आइटम आपको दिख रहा होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग्स. ऐसा कोई लाइन आइटम है अंडर द इक्विटी वन? हाँ. है ना. सो दैट रिजर्व्स एंड सरप्लस कहाँ से आ रहे हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो जो नेट इनकम है, लेट्स सपोज जो इनकम स्टेटमेंट की जो नेट इनकम है वो 100 रुपीज है. अब इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, या तो कंपनी इस पैसे का डिविडेंड देगी शेयर होल्डर्स को, या सी इफ इट्स अ मैच्योर कंपनी तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड दे देगी शेयर होल्डर्स को, उनका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर रिटर्न्स, हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करेगी. एंड इफ इट्स अ ग्रोइंग कंपनी, इफ इट्स नॉट अ मैच्योर्ड, राइट, तो कंपनी को खुद को एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहिए. ओके. तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, रिटेन्ड अर्निंग्स मीन्स कंपनी अपने पास खुद के पास पैसा रख देगी कि भाई मुझे ही अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है, हम शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं दे रहे हैं. तो लेट्स से डिविडेंड दिया 40%, 40% ऑफ 100 इज 40 रुपीज एंड रिटेन्ड अर्निंग्स है 60%. इट मीन 60 रुपीज उन्होंने अपने पास ही रखे. Now the 60 rupees will come under the equity वाला reserves and surplus भी कुछ companies बोलती हैं, या retained earnings, दोनों में से कोई एक terminology होगी. So that value is nothing but which they have taken from the income statement as a retained earning. Am I making sense now? नहीं दिया हुआ है इसमें तो. मैम तो नहीं कंपनी होगा डिविडेंड आपकी कंपनी क्यों का. प्रोवाइड करती है? डिविडेंड क्यों प्रोवाइड करती है? ओके. नाउ सपोज नेट इनकम है 100 रुपीज. ओके, जैसे अभी हमने किया. नाउ व्हाट टू डू विद दैट 100? सारे एक्सपेंसेस हो गए, सब कुछ कंपनी ने निकाल दिया, एंड देयर इज नो स्कोप फॉर एक्सपेंशन, there is no scope of any growth, no scope of any research and development. For example, take an example of Pepsi. The moment Pepsi changes anything, people won't buy it. So Pepsi has come to its saturation in the terms of drinks. जो ओरिजिनल पेप्सी का प्रोडक्ट है, राइट. तो अब उसमें तो पैसा इन्वेस्ट करेगी नहीं. एंड जस्ट इमेजिन कंपनी के पास सिर्फ पेप्सी ही है. अभी तो पेप्सी को इज इनटू द
चिप सेगमेंट और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं उसके। तो सी उसको अपने मेन प्रोडक्ट से जब दूसरे प्रोडक्ट्स वेंचर इनटू करने होंगे तब उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने रिटेन अर्निंग ज्यादा रखी होंगी बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा चाहिए, टेस्टिंग में पैसा चाहिए, राइट। सो देयर आर मेनी अदर, न्यू फैक्ट्री लगानी होगी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी लगानी होगी। बट कोई कंपनी एकदम मैच्योर स्टेज पे आ गई तो क्या करेगा उस पैसे का, तो वो लोग यही सोचेंगे ना कि भाई चलो हम शेयर होल्डर्स को ही रिवॉर्ड कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई दे गिव हायर डिविडेंड्स or the dividends I would say. मैम Yes. मैम विदाउट रिटेन अर्निंग कंपनी बैलेंस शीट इशू कर सकती है, बना सकती है? हाँ मैं वही कह रही हूँ, जरूरी नहीं है कि रिटेन अर्निंग्स हो, है ना। लेकिन मैम वो कैश अगर मैं इंक्लूड करता हूँ बैलेंस शीट में कैश फ्लो से के बाद, तो फिर वो मैच कैसे करेगा बिना रिटेन अर्निंग का? हाँ अब उस केस में ये लोग क्या करते हैं, कभी बाय बैक करेंगे, कभी कोई और कॉर्पोरेट एक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ ये लोग गिमिक करते रहते हैं ताकि उनका कैश इतना हाई नहीं दिखे एंड उनको इतना ज्यादा टैक्सेस पे नहीं करने पड़े एंड उनका डिविडेंड भी नहीं देना पड़े। तो कुछ ना कुछ ट्विकिंग वो लोग अपने अंदर ही अंदर करते रहते हैं। अब क्या क्या कॉर्पोरेट एक्शन वो लोग करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बट सी अब कंपनी को भी तो अपना सस्टेनेबल एक होल्ड करके रखना है। सो दे नो हाउ टू डील विद द मार्केट, मेनली द रेगुलेटर है ना, क्योंकि द रेगुलेटर इज वेरी स्ट्रिक्ट नाउअडेज। सो अगर इतना सारा कैश है तो उनके तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। Ma'am, I am looking for at the Godrej. Your voice is breaking. Ma'am, I have seen. Ma'am, am I clear now? Yes. Ma'am, I see goodwill written over. I haven't seen goodwill anywhere in other reports. Yeah. Like जो आपकी 5-6 कौन सी महीने देखी है कंपनी अब है? तक, I have never seen goodwill. Godrej ma'am. तो इन्होंने कोई और कंपनी या कोई दूसरी सब्सिडरी कंपनी, I mean they must have taken any other company and now it would be the subsidiary company of Godrej. तो क्या होता है ना, गुडविल इज इंटेंजिबल। सपोज टाटा एंड स्टारबक्स का जब पैचअप हुआ था, द इंटीग्रेशन हुआ था, राइट, तो स्टारबक्स हैज अ ब्रांड नेम, राइट, तो उसका पैसा देना पड़ता है। जब लैंड रोवर एंड जैगुआर का हुआ था तो उसका पैसा देना पड़ता है बिकॉज द ब्रांड इटसेल्फ हैज अ ह्यूज प्राइस अटैच्ड टू इट। यस, तो खुद का नहीं बता सकते बस। घर पे आ जाओ। Like cannot क्या take नहीं goodwill बना of सकते its own, मतलब? but like they cannot place उनका खुद का गुडविल पे वैल्यू। नहीं टाटा खुद ये का नेम नहीं पे होता। दे वुड हैव पेड टू अदर कंपनी इन ऑर्डर टू, जब उनका M&A हुआ होगा या दे वुड हैव परचेज सम टेक्नोलॉजी फ्रॉम द अदर कंपनी, दे वुड हैव पेड फॉर द इनटेंजिबल आइटम्स। तो गुडविल हमेशा इज एसोसिएटेड विद द इनटेंजिबल थिंग्स, ठीक है। सपोज IPRs होते हैं, राइट्स होते हैं, राइट। सो क्या बोलते हैं उसको, even you cannot copy paste the other company's icon or trademarks होते हैं for example. So when you buy such things you have to pay a huge value to it, to the other company for using it. That will वो come under the पेटेंट्स होता है goodwill. ना, Patents, yes, patents, trademarks. Yeah. Got it. Okay, so मैं क्या एक्सप्लेन कर रही थी, आई जस्ट फॉरगॉट। ठीक है, आई गेस बैलेंस शीट हमने डिस्कस किया अभी, है ना, एंड इनकम स्टेटमेंट। ओके, सो द थर्ड वन इज द कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो पे अभी नहीं जाते हैं। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड अप अपॉन द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लो पे जाएंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। Hope you have now the clear picture of these two financial statements. Any doubt from these financial statements? तो मैम लाइक कंपनी जब डिविडेंड इशू करता है तो देन उनके इक्विटी प्राइस पे कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या मैम?
जब डिविडेंड इश्यू करते हैं तो इक्विटी प्राइस पे, सी फ्रॉम द कंपनी साइड तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, राइट, बट मार्केट सेंटिमेंट्स ये होता है ना कि जब भी डिविडेंड इशू होता है या होने वाला होता है पहले से न्यूज आ जाती है, तो वो बुल या बेयर रन आ जाती है, एंड इट्स प्योरली मार्केट सेंटिमेंट, कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, बट पीपल टेक इट इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे, इट डिपेंड। नहीं मैम, अभी तक मैंने बेयर रन ही देखा है, इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा था। या बट जैसे देखो एसबीआई के रिजल्ट्स इतने अच्छे आए थे, देखो प्राइस कहाँ पे टच कर गया, अभी 2-3 दिन पहले की बात है उसके रिजल्ट्स आए थे, सॉरी रिजल्ट्स थे वो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, आई कम्प्लीटली एग्री, बट जैसे डिविडेंड्स, इन्फोसिस बहुत अच्छे डिविडेंड्स देती है, टीसीएस देती है, एंड ऑलमोस्ट कितने मंथ के लिए वो इन्वेस्ट करना पड़ता है मनी, देन डिविडेंड मुझे प्रोवाइड होते हैं? see so dividend is like एक उनकी डेट आती है एक्स डेट, एंड सो दिस अ कंप्लीट फ्लो, राइट, कि अगर आपके पास शेयर्स हैं बिफोर दिस डेट ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। तो जब उनकी एजीएम दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली होती है उससे पहले ये अनाउंस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो इट टू यू, मेरे पास अभी एक कंपनी का आया था, कैन यू सी दिस, सी ये प्राज इंडस्ट्रीज का है, ठीक है। We wish to inform you that the board of directors of your company meeting held on ये has recommended a dividend of rupees 2.16 108% per equity share। देखो इसमें फेस वैल्यू दी हुई है कि अभी शेयर की फेस वैल्यू की कितनी है 2, तो ये जो परसेंटेज मिलेगा दैट वुड बी ऑन द फेस वैल्यू, so just calculate 108% of 2 rupees face value, it would come to the 2.16 for the financial year ये subject to the approval of the shareholders। अभी अप्रूव कब होगा, it will be approved under the annual general meeting which is to be held on the 11th of August। So if the shareholders, it means people like me who are the shareholders, if we approve कि हाँ this dividend is okay, only then it would be credited, and कब तक credited होगा, by 31st of August if it gets approved on the 11th of August। Okay, I got it. ठीक है, so they clearly mentioned each and everything, so there is no discrepancy in the data। आपको हर चीज यानी कि अच्छे से पता होती है। Okay। ठीक है, भैया यस, एक लाइन आइटम में डाउट था। हाँ बताइए। बैलेंस शीट में एक राइट ऑफ यूज असेट्स, हाँ तो उनका क्या ओके, सो राइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स है ना, और सपोज आप बेच रहे हो, मैम राइट ऑफ नहीं, राइट ऑफ यूज असेट्स, राइट ऑफ लीज एसेट्स, यूज असेट, यूज्ड एसेट्स ना, हाँ मैं वही बता रही हूँ, जो भी आपके मेनली जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं व्हेन यू हैव टू सेल देम ऑफ, तो इनकी प्राइस, अब देखो, so this is an accounting terminology I would say, ठीक है, from the financial analysis perspective it is not that important but it is an accounting terminology। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बुक्स में से जब आप बेच रहे हो उसकी वैल्यू एकदम जीरो कर दोगे, है ना, तो देयर इज अ राइट ऑफ वैल्यू कि आपको कितना मिला, या अगर आपका रिप्लेसमेंट है तो रिप्लेसमेंट वैल्यू को हटा के क्या एक्चुअल वैल्यू में आपने मार्केट में बेचा, राइट, सो दैट इज द राइट ऑफ वैल्यू ऑफ द जनरली फिक्स्ड एसेट्स होता है कि जब आप उसको निकाल रहे हो अपनी कंपनी से उस टाइम के आपके प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। ओके। Now shall we start with the ratios? So what you are supposed to do is you have to open one Excel sheet, okay, एंड जो भी रेशियोज हम अभी डिस्कस करेंगे आप पैरेलल, मैं आपको आई विल गिव यू 1 minute ऑफ टाइम एंड यू हैव टू कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू योर कंपनी। सो एक टैब में ओपन करके रखिए एनुअल रिपोर्ट, एक टैब में दिस एक्सेल शीट, ओके।
Ready? ठीक है. So the first one is the earning per share. Earning per share, just go with the name. Earning per share. It means what would be there in the numerator, that is earning. Of how many different types of earning we have studied? We have studied the gross profit is nothing but earning only. First of all, revenue, gross profit, operating profit, EBIT, EBT, and PAT, that is the net income, right? So these are the 1, 2, 3, 4, 5, 6 types of earning we have. Okay, and the denominator is per share. It means total number of shares outstanding we have to take, right? अब इसमें से कौन सी earning लेनी है? We will take the net income, that is the net profit, that is the PAT. Okay, so PAT divided by total number of shares outstanding will give you the earning per share. What is the inference? What is the company gaining on the per share basis? Because suppose profit है आपकी कंपनी का 100 रुपए, शेयर्स हैं सपोज 10 रुपए, तो हर एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 100 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज द 10 रुपीज का. तो पर शेयर बेसिस पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, दैट विल गिव द रेशियो, दैट इज द ईपीएस. Generally, people like you and me, that is the retail investors, are very much interested in understanding the EPS. Because हमारे लिए तो EPS अगर इंक्रीज हो रहा है तो ही अच्छी बात है ना, अगर डिक्रीज हो रहा है तो मेरे को तो मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है. So I would not continue with that share, right? So for us, EPS is very, very important and it should be on the increasing side. Making sense? Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, now calculate it for your respective company and send it in the chat box कि आंसर क्या आ रहा है. So that, see, most of you have taken FMCG industries, no? So आपको एक एवरेज मिल जाएगा कि हाँ FMCG इंडस्ट्री का एवरेज क्या चल रहा है. पी रेशियो निकालना है ना. EPS. We are discussing EPS, no? Yes, ma'am. Let me know once you guys have done, okay? Ma'am, what is the difference between basic EPS, diluted EPS, and cash EPS? हाँ. Good, I will tell you. ठीक है, we will understand. पहले ये calculate करिए the basic one, then we will go in detail. Done? Yes, ma'am. Yeah? ठीक है.
Okay, so see around 11 10 है ना आपके EPS हैं. So for every I mean shareholding per share है, so per share कितना sorry earning per share है, so it is around 10 11 14 ठीक है, इसी रेंज में है ये. ओके, नेक्स्ट वी हैव डिविडेंड पर शेयर. अभी जैसे मैंने आपको दिखाया व्हाट इज द डिविडेंड परसेंटेज यू आर गेटिंग. अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. डिविडेंड यू आर गेटिंग डिवाइडेड बाय द फेस वैल्यू. अभी जो लेटेस्ट एग्जांपल है प्राज इंडस्ट्रीज का मैंने आपको दिखाया 2.16 was the dividend which was declared. 2.16 divided by face value which was 2. So what was the dividend per share? 108%. Yes. Similarly, you have to calculate if your company has declared dividend. तो आप कहाँ से देखोगे. Go to the BSC's website. वहाँ पे corporate actions करके होगा and search for your respective company. Yes. मिला आपको बीएससी की वेबसाइट से. नहीं मैम. किसी को भी नहीं मिला. Nobody got it. नहीं मैम. Under the corporate tab, can you see the corporate the corporate action? Ma'am, I got it. You got it? Good. Select your company name. आप अपने रिस्पेक्टिव कंपनीज डालिएगा. 11th जून को डिविडेंड पे किया है ना. तो भी जो लेटेस्ट होगा दैट यू हैव टू टेक. गॉट इट नाउ. Yes or no? Yes, ma'am. Yes.
please explore NSC BSc website also. I had asked you to do that from the day one itself, right? जब भी टाइम मिलता है you have enough of task to do. ऐसा नहीं है कि for whole week you don't have anything to do. You just need to spend some time. रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो it won't be like a burden to you. But every day spend at least 1 hour on these two websites, annual report. ठीक है, डन। एक काम करिएगा, यू डू इट आज, है ना? आज अपन इतना ही रखते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ते हैं, बट जितना मैंने किया है जस्ट उसको ग्रास्प करिए एंड मेक अ पर्टिकुलर टेम्पलेट काइंड ऑफ थिंग इन योर एक्सेल, कि जहाँ पे सारे आप रेशियोज ऐड ऑन करते जाएंगे, राइट? एंड मेक 2 more tabs, one for the income statement, one for the balance sheet, and copy paste your income statement and balance sheet for the let's say last 5 years. So ये कैसे होगा मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये बैलेंस शीट है, राइट? तो यहाँ पे सारे इस कॉलम में सारे लाइन आइटम्स और इनकम स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे सारे लाइन आइटम्स आ जाएंगे, जैसे ये लाइन आइटम्स है, ठीक है? Start from 2016. So input the income statement line items from 2016, 2017 in this column, 2018 in this column, 2019 in this, 2020 and 2021, last 5 years. ठीक है, 2021 का अगर शायद आ गया है, मेनली तो आ जाना चाहिए। Okay, then you can take it from 2017, और जिनके पास 2020 तक का है you can take it from 2016 and just punch in all the data by downloading the previous annual reports and just fill it. Okay, you just need to punch in the data, nothing else. Similarly you do it for the balance sheet का बैलेंस शीट का इतना सारा भी वेरी डिफिकल्ट, तो बैलेंस शीट का जस्ट डू इट फॉर द लेटेस्ट ईयर, ओके? दैट इज द 2021 और 2020, जो भी आपके पास लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है। मेक टोटल 3 शीट्स, इनकम, जस्ट अ सेकंड, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड रेशियोज। यस, टेल मी। मैम इसका एक्सेल फाइल डायरेक्ट नहीं मिल सकता? इसका एक्सेल फाइल मीन्स 5 ईयर का जो इनकम स्टेटमेंट का जो टोटल पंचिंग करना होगा वो डायरेक्ट नहीं मिल सकता है कहीं पे? हर चीज डायरेक्ट ही करनी है, नहीं कि सीखना है ही नहीं कुछ। बस इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम क्या लगना है, कॉपी पेस्ट करना है डेटा, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। एंड अगर आप खुद करोगे तो आपको खुद को you will make out, you will do some analysis ना, कि ये increase हुआ है over a period of time, ये decrease हुआ है। एक्सेल शीट दे दी, बोलोगे हाँ भाई बताओ क्या करना है, फिर तो स्पून फीडिंग हो गई। जब आप खुद करोगे तो वो खुद को लगेगा ये इंक्रीज क्यों हुआ है, अच्छा इसके एक्सपेंसेस बढ़े हैं क्या, इसका टैक्स बढ़ा है क्या। Now it's not, see this is not a stage कि मैं आपको एक एक चीज spoon feed करूँगी, why I'm asking you to do. If I ask you to copy paste the data, it means the back end process which you have to do is you have to make your own analysis कि ये increase हुआ है तो क्यों हुआ है, you can find out the line item. अच्छा प्रॉफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हुआ है तो क्यों हुआ है, कहीं टैक्स इंक्रीज हुआ है या डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हुए हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हुए हैं, या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, right? So that you have to do the primary background thing. Okay ma'am. Okay. Hope everybody would do it by the next weekend. Yes ma'am. Yeah. ठीक है, ये तैयार करके रखिएगा पूरा फॉर्मेट, okay? And then we will continue with the other ratios in the next session. Okay. Any doubt from the today's session? Yes. मैम अगले संडे का मैम 15 अगस्त है, तो उस दिन क्लास होगी? हाँ हाँ, यस जरूर होगी। ओके मैम, ओके। या एनी डाउट? मैम आई हैव अ डाउट। यस, लाइक आपने बताया ना अर्निंग पर शेयर इज द टोटल नंबर ऑफ द शेयर्स डिवाइडेड बाय पैट, आई मीन प्रॉफिट आफ्टर नहीं टैक्स, उल्टा, राइट? PAT divided by, see अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग ऊपर आएगी ना, इट्स अ न्यूमरेटर थिंग।
Okay. Right, right. जो आप Thank you, बोल thank you, रहे हो ma'am. ईपीएस उसी में लिखा हुआ है, क्या न्यूमरेटर है क्या डिनोमिनेटर है. हाँ. See, my methodology is not to mug up things. I will never ask you to mug up anything. Just go with the name and understand it. You will understand each and every ratio. Correct. ठीक है? Any other doubt? Thank you, ma'am. Astha, you are not clearly audible. You need to. Please type it in the chat box. I will see it. Astha, please type it in the chat box. मैम जिनकी क्वेरी नहीं लीव कर दें. Yes, yes, you can. ओके. Thank you, ma'am. Yes, Astha, type it in the chat box. हेलो मैम. Yes. मैम ये मैं HUL का हिंदुस्तान यूनिवर्स का बना रहा था. इसमें एग्जैक्टली EBITDA सब दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? EBITDA रेशियो जो दिया हुआ रहता है ना, मीन्स हाँ. नेट EBITDA बाय रेवेन्यू. तो वो अगर मुझे किसी कंपनी का एनालिसिस करना होगा तो वो कितना परसेंट से एनालिसिस करे कि ये कंपनी का EBITDA या नेट इनकम प्रॉफिट गुड है या बैड है. हम करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, है ना. हम उस स्टेज तक भी पहुंचेंगे. तो जस्ट होल्ड ऑन फॉर फ्यू मोर सेशंस, हम डिस्कस करेंगे. एंड मैम ये आप बता सकते हो फिर से टोटल आउटस्टैंडिंग से मिलेगा कहाँ, क्योंकि मुझे नहीं मिला है. ओके, सो आपके एनुअल रिपोर्ट में एक लाइन आइटम होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न करके, या समथिंग रिलेटेड टू द शेयर होल्डिंग. आप कंट्रोल एफ करिए अपनी नोट्स में. नहीं, पहले होगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पहले टॉपिक होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न करके. आपको उस हेडर के अंडर मिलेगा शेयर होल्डर पैटर्न. आई डोंट नो आपकी कंपनी में कैसे लिखा हुआ है, बट ऐसा करके कुछ लिखा हुआ होगा. आप शेयर होल्डिंग करके सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा. सर्च कैसे करना होगा? कंट्रोल एफ करिए और वहां पे लिखिए शेयर होल्डिंग एंड देन एंटर करते जाइए जब तक वो पैटर्न, आई मीन एक टेबल टाइप ऐसा करके कुछ होगा. ठीक है. क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर, शेयर होल्डिंग, यस, पैटर्न. मिला? आप शेयर स्क्रीन कर, आई मीन स्क्रीन शेयर करिए. मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करिए. हो गया? शेयर करनी पड़ेगी आपको स्क्रीन. हाँ, शेयर हो गया. एक मिनट, अभी आ रहा है. हाँ, लिखिए शेयर होल्डिंग, लिखिए SHARE, SHARE. हाँ, एंटर करिए. और एंटर करिए. एक मिनट. हाँ, सी नोट्स में ही दिए हुए हैं. कितना है ये? 111,437,0148 shares as on 31st of March 2020, है ना? Can you see this?
कहाँ पे मैम? ये है ना 11143 इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 रुपी ईच के नीचे। ये वाला? सी 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 वाला, सी वाले में है ना। ओके, दिस वन। हाँ, ओके so these are the total number of shares। ओके ओके ओके। ठीक है। हम्म। तो मोस्टली मैम नोट्स में ही रहता है या फिर और भी कहीं रहते हैं? नहीं, पहले भी होता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि किस नेम से। तभी मैं कह रही हूँ, आप एनुअल रिपोर्ट रीड करेंगे तो आपको खुद मिलेगा कि कहाँ पे मेंशन्ड है। एनुअल रिपोर्ट। हेलो। हाँ जी। मैम एनुअल रिपोर्ट रीड करने के लिए क्या डायरेक्ट तो क्या कहते हैं, एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट में नहीं घुसना पड़ेगा ना? पहले मैनेजमेंट डिस्कशन को पढ़ूंगा या फिर टोटल ऊपर से लाइन बाय लाइन? हाँ हाँ, जैसा आपको यानी कि कन्वीनियंट लगे। यस लाइन बाय लाइन। राहुल। हम जो ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, हम्म। हम नेट प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर देते हैं, बट उनमें Yes। मैम हम बॉन्ड्स एंड अदर जो इश्यूज होते हैं कंपनी के। कौन से इश्यूज होते हैं? हम जैसे बॉन्ड्स वगैरह या फिर बॉन्ड तो डेट आइटम है ना, बॉन्ड इक्विटी है ही नहीं, बॉन्ड तो डेट लाइन आइटम है। यस मैम, तो फिर मैम हम कुछ अदर एक्स्ट्रा आइटम्स भी तो होते हैं ना जो इक्विटी में इंक्लूडेड होते हैं अदर देन बॉन्ड, अदर देन शेयर्स। इक्विटी इज शेयर होल्डिंग ओनली, नो। सो इक्विटी में सिर्फ इक्विटी ही इंक्लूड होगा, बॉन्ड तो डेट है। सो दीज आर टू कंप्लीटली डिफरेंट सेक्टर्स। वो डेट है, वो डेट मार्केट का पार्ट है, और ये इक्विटी सेगमेंट का पार्ट है। यहाँ पे हम सिर्फ इक्विटी को कंसिडर करते हैं। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर एंड नॉर्मल अर्निंग क्यों आती है डिफरेंस? हाँ हाँ, दैट आई विल टेल यू। वो पूरी क्लास में मैंने बताया ना, मैं आपको डिस्कस करूंगी। अभी मैंने डिस्कस नहीं की है वो चीज। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन नेक्स्ट सेशन। ये किसी और ने भी डाउट किया था, सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, डोंट वरी। मैंने ही पूछा था मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पूरे जब सब लोग होंगे ना, तब वी विल डिस्कस। ठीक है। मैम। हाँ जी। मैम आपने फर्स्ट क्लास में बताया था, एक्चुअली मैं फर्स्ट क्लास में नहीं था। हाँ। लाइक कि अगर किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने के लिए पहले इकोनॉमिक सेक्टर को देखना पड़ता है, इंडस्ट्री सेक्टर को देखना पड़ता है, देन द कंपनी सेक्टर। बट मैम जिस तरह से इंडिया का अभी जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो तो मतलब ठीक ठाक नहीं है, बट शेयर मार्केट में भी तो फिर इंक्रीज ही हो रही है, तो वो मैं कैसे चेक करूँगा अगर? हाँ हाँ, सी दीज आर एबनॉर्मल टाइम्स। थियोरी कुछ कह रही है, प्रैक्टिकली कुछ और चीजें हो रही हैं। हाँ तो हाँ, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। दिस इज वेरी बैड टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स, बिकॉज आपको थियोरी में कुछ अलग कॉन्सेप्ट मिलेंगे, उसके कम्प्लीटली ऑपोजिट प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है। So don't merge these two things. Just stick to what all concepts you have understood. तो जब normal business economic cycle आएगा ना, तो same things होंगे। अभी it's very abnormal thing which is going on. Economic activities हो नहीं रही हैं, but stock market इतना ऊपर जा रहा है। Every day it is making new highs. So I don't know what's happening. Yeah. नहीं, आप इस पे फोकस मत करिए। आप जो अपने कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप वही अपने दिमाग में रखिए। थैंक यू मैम। ठीक है। एंड मैम सेक्टर जो एनालिसिस करना पड़ता है, मैं वो कैसे करूँगा? मीन्स वो हम आएंगे, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, हम आएंगे उस पे। अच्छा है ना, अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, आएंगे हम धीरे धीरे उस पे। ओके मैम। एंड मैम ये जो मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया हुआ उसमें आप बता सकते हैं कि स्टार्टिंग एनुअल रिपोर्ट करूंगा कहाँ से? मैं मींस रीड करना फ्रॉम द पेज 1 पूरी एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है आपको, कोई एक्सक्यूज नहीं है, फुल। हाँ ओके 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 ओके। ठीक है, पूरा हफ्ते के टाइमिंग है आपके पास, ऐसे कि ना पूरा महीना है। मैं तो सिर्फ 2 दिन पढ़ाती हूँ आपको, बाकी के दिन आप क्या करोगे? ओके ओके है ना।
लाइक ठीक मैं है। पहले पढ़ता था तो मैं सिर्फ कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मैनेजमेंट डिस्कशन का ही पढ़ छोड़ देता था। नहीं नहीं नहीं, सब पढ़ना है सब। अब देखो जैसे आज मैंने आपको पूछा, अगर आपने पढ़ी होती तो आपको एक ही बार में मिल जाती ना शेयर्स, मुझे कहाँ मिलेंगे। एक्चुअली मैं सिर्फ फाइनेंशियल फोरकास्ट करता था, मींस मुझे मिल जाता था तो लाइक। नहीं नहीं, पूरी पढ़नी है। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके कैन आई ठीक है। स्टॉप शेयरिंग? या ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय, वेलकम, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।